Hey guys, welcome again. My name is Smita and I'm here again with yet another beginner's lesson on articulate storyline. In this learning series, I'm going to speak in both Hindi and English language. When explaining an important concept, I will explain the topic in both Hindi as well as in English language. And of course, if you like this content, please like and subscribe to my channel. In this video, we will create a new standard storyline project from scratch and then resize the project or story size to our custom size. इस वीडियो में हम एक नया storyline project create करेंगे और फिर उसकी story size अपने हिसाब से बदलेंगे. In my opinion, navigating and performing a task on any software is the easiest part. However, knowing when and why do you do something requires experience and fair knowledge of the concepts. In this lesson, we will not only learn to change the story size, but we will also discuss why and when to make these changes. So now let's create a new standard storyline project by selecting a new project option on the welcome screen. Storyline will select a default size for any new project. You can, however, change this to any size you would like. नया standard project create करने के लिए new project पर click करें. ये नया प्रोजेक्ट एक डिफ़ॉल्ट साइज में क्रिएट होगा. आप ये स्टोरी साइज अपने हिसाब से कभी भी बदल सकते हैं. So before we learn about resizing the story size, let's first find out about screen aspect ratio, screen resolution and planning involved before creating a new project. Also, it is best to make this decision before you start working on the project. Changing the story size later is possible, but a little complex and is a tedious task. You will then have to resize and adjust the assets on the project to the new size. I would typically amend the story size based on multiple criteria, like the type of training, LMS settings if any, how my learners are accessing the course, and finally, how and where the course is deployed. टूल में resize ऑप्शन सीखने से पहले हम एस्पेक्ट रेशियो, स्क्रीन रेजोल्यूशन और नए प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले किस टाइप की प्लानिंग करनी चाहिए ये जानेंगे. मैं रेकमेंड करूँगी कि ये डिसीजंस आप डेवलपमेंट शुरू करने से पहले लें, क्योंकि बाद में रीसाइज करने से आपको स्टोरी लाइन के सारे एसेट्स नए साइज़ के हिसाब से बदलने पड़ेंगे. मैं हमेशा अपना स्टोरी साइज़ कई फैक्टर्स को ध्यान में रख के डिसाइड करती हूँ, जैसे कि टाइप ऑफ ट्रेनिंग, LMS सेटिंग और मेरा कोर्स किस तरह से डिप्लॉय होगा या फिर लर्नर्स उसे कैसे एक्सेस करेंगे. To change the story size, go to Design tab and then click on the story size. This will now give you options to change your story size. The default size of any project is set to 720 pixels wide by 540 pixels high. Now let's first understand the numbers here from the drop-down menu. The first number here is the aspect ratio, followed by the resolution. Story size resize करने के लिए Design tab में Story size ऑप्शन क्लिक करें. अब आपको resize करने के ऑप्शंस दिखाई देंगे. स्टोरी लाइन में किसी भी प्रोजेक्ट का डिफ़ॉल्ट साइज 720 पिक्सेल्स चौड़ाई में और 540 पिक्सेल्स लंबाई में होता है. ड्रॉप डाउन मेनू में पहला आंकड़ा एस्पेक्ट रेशियो है और दूसरा रेजोल्यूशन है. चलिए तो एस्पेक्ट रेशियो और रेजोल्यूशन के बारे में जानेंगे. Aspect ratio of the screen is the relationship or ratio with its width compared to its height. The two most used aspect ratios are 4:3, also known as full screen, and 16:9, also known as widescreen. The 4:3 aspect ratio dates back roughly to 1917 when the Society of Motion Picture Engineers adopted it as a standard format for films. This has been a popular choice until the recent move to HDTV and widescreen option. So your 4:3 aspect ratio appears more squarish and tall, whereas 16:9 aspect ratio will result in a widescreen project. There are far more aspect ratio options, but these two are relatively the popular choices. Screen aspect ratio ये आपकी स्क्रीन की चौड़ाई और लंबाई के बीच का रेशियो है. 4:3 यानी कि फुल स्क्रीन और 16:9 यानी कि वाइड स्क्रीन
ये दोनों सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एस्पेक्ट रेशियोज़ हैं। 4:3 एस्पेक्ट रेशियो अधिक चौकोर और लंबा दिखाई देता है, जबकि 16:9 रेशियो वाइड स्क्रीन प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके HDTV या वाइड स्क्रीन प्रोजेक्ट के लिए 16:9 ये एक परफेक्ट चॉइस है। Resolution, on the other hand, refers to the number of pixels, that is tiny colored dots, that a screen can display both vertically as well as horizontally. So the 720 by 540 pixel means that there are 720 pixels on the width and 520 pixels on height. आपके स्क्रीन पे लंबाई और चौड़ाई में जितने पिक्सेल्स या फिर छोटे छोटे कलर डॉट्स होंगे, यह आपके स्क्रीन का रेजोल्यूशन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 720 by 540 पिक्सेल्स मतलब स्क्रीन के चौड़ाई पर 720 और लंबाई पर 540 पिक्सेल्स है। Your challenge for the video is to find out different aspect ratios and screen resolutions other than the ones that we discussed in this lesson. I hope you liked this video. If you like this content, please subscribe to my channel. See you then!